Hi guys, so today we're gonna solve few questions from Codeforces again. What I am currently doing since I have completed that sheets ka like I think 1100 wala scene, I will gonna start 1200 soon, and I also started but it felt like ये थोड़ा ज़्यादा hard लग रहा है मुझे. So what I will gonna do, I will solve that, but I what I'll do is कि I'll let me show you guys some. ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं बनाएंगे. सो व्हाट आई विल डू कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे जितने सारे diff 2 diff 3 है जो मैंने अटेंड नहीं किए बीच बीच में, सिंस आई थिंक यहाँ से मैंने लिया है, आई थिंक एटलीस्ट मुझे पता नहीं, मैंने कहीं से तो मतलब उठाया है, मैंने प्रॉब्लम्स से बना के रखे हैं. सो रिसेंट कॉन्टेस्ट जो जो मैंने नहीं दिया है उनका diff 2 का बी और सी करेंगे. और सी भी 1400 वाला नहीं, मैं रेटिंग मार के रखा हूँ, लाइक 1300 के अंदर वाला. ओके. So we're gonna try to solve them. I don't know how many I can solve today. Obviously not five of them, but even if I don't even know that key, even if I can solve only one or not. But we'll gonna try. I'll gonna try, and you guys gonna watch. So wish me luck, and let us start. Let us start with the first problem, and let me just open Excalibur. Though I have again same shit. I have a copy and a pen with me, and yeah, this all I have. Let us start with the this one or this one. Which one should I choose? Um, okay, let us choose. We have one Zord wala thing, one this, one this, one this. Okay, so this is number three. So let us take one number theory wala, and this is Zord wala. This is also something like I know I can't solve C. Like मुझे पता है मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए. आई शुड फील कॉन्फिडेंट एवरी टाइम. सी है इसलिए हार्ड है ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे पता है मेरा लेवल कितने का है. बट या विल गोना सॉल्व दिस सी जो कि डिप 3 का है. अच्छा, तो ये सी सबसे हार्ड होगा आई थिंक. तो लेट अस सॉल्व दिस वन किसी और दिन. और आज ये करते हैं या ये. ओके, लेट अस डू दिस टू. ओके, दिस एंड दिस. At first we're gonna solve number theory वाला because number theory मैंने practice किया था बीच में. Okay, let us read. You're given an array of n. Okay. Again, मेरा speed अच्छा नहीं होगा typing speed because I am using this gaming keyboard. और इसमें मैं टाइप ज़्यादा स्पीड नहीं कर पाता क्योंकि इसके एक कीज दबाता हूँ दूसरा दब जाता है. I don't know why. In one operation you can choose any index I and an integer x which is at least k and set a I to ai mod x to make all element array identical among all positive integers k. Determine the maximum value of k for which there exists a finite sequence of the above operation that make all elements of the array equal. Okay, so we have to choose one element, one integer x, at least k. Is it always possible? Yes, I think. You choose an index I and an index and an integer लिस्ट के. एट एटलीस्ट के मतलब के और के से बड़ा. ग्रेटर इक्वल्स के. ओके, ग्रेटर इक्वल्स के दैट एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स के एंड के दिया हुआ रहेगा क्या? नहीं. ओके, के तो फिर कहाँ से ढूंढूं मैं? विच इज एटलीस्ट के एंड सेट योर गोल टू मेक all elements in the array identical among all possible integers k. Determine the maximum k. ओके, हमको के ही निकालना है. x should be greater equals k. The maximum value of k. ai को ai mod x बनाना है और
हर एक ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव a1 a2 a3 a4 a5, वी हैव टू मेक, और x कुछ भी हो सकता है हर एक ऑपरेशन इन ऑपरेशन यू चूज इन इंग्लिश, तो देयर शुड बी बाउंड्री ऑफ x, लाइक x शुड बी ग्रेटर इक्वल के, तो और k का वैल्यू मैक्सिमम लेना है मुझे, तो मैं x क्या ऐसा चूज करूँ जो कि इन सबको इक्वल बना दे। इन सबको इक्वल बनाने के लिए क्या, फॉर एग्जाम्पल x, तो a1 mod x should be equals a2 mod x, where x can be anything, x can be कोई और वैल्यू, लाइक बिकॉज, हाँ, बट वो वैल्यू k से ज्यादा होना चाहिए, बस k से इक्वल और ज्यादा, और जो k है उसको मुझे मैक्सिमम लेना है। अच्छा ओके, कैन आई सॉल्व दिस, आई शुड, a1 is greater than x, a2 is also greater than x, नो, हर एक वैल्यू इक्वल चाहिए, तो इक्वल लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल लाने के लिए मुझे यहाँ पर जैसे 5 7 9 है, 5 7 9, ऑल ऑफ देम इक्वल, एंड एक से मॉड करूंगा जिससे इसका वैल्यू भी सेम है, इसका वैल्यू भी सेम, इसका वैल्यू भी सेम। सो एट द एंड हमको मिनिमम एक्स निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है जिससे सबका मॉड करूंगा, और उस या फिर उससे ज्यादा का जो आज दे देगा मुझे, राइट। मिनिमम एक्स निकालना है अमंग ऑल द एक्स। You're gonna give me one. Yeah. The answer is 5 for this. That means 5 mod 5. 5 means what? 5 से ज़्यादा का. Maximum K is 5. That means X का वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा हो, हाँ हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू तो ऑलवेज होगा। Can't I just say minimum value is the answer always? Because it will always gonna give me 0 0 0. If I choose 5 here, and 5.5 is 0, then we'll gonna choose 5 से ज़्यादा value, which is 7. 7 mod 7 0, 9 mod 9 0. Yeah, the minimum, but यहाँ पर इस एग्जांपल में it's 6 not 5. That means 6 is the maximum value. और वो कैसे मुझे पता चलेगा? How? Okay, this is 1100. This should be, I should solve the. Okay, this is 1100. Nice. Um, what can I do so that ये हो जाए solve? 1174, 522, 52, 97, 82. The answer is 6. That means if I take 6 or value greater equals 6, मतलब मिनिमम एलिमेंट से जब मैं करूंगा इसका हमेशा, 5 mod 6 is what? It's nothing but 5 itself. So we are trying to make, see, the thing is, if I just do 5 mod 6, huh, then it will gonna give me 5, right? Yeah. So any number which is greater than, like if I do x mod y, where x is less than y, it will gonna give me x always. The answer is, the answer is 6. That means 6 या 6 से ज्यादा, तो ये 5 के साथ जब भी करूंगा वो 5 ही होगा वैल्यू। इसका मतलब क्या,
That means we are trying to make all our element. That means we are trying to make all our element as 5. So that's our goal. Can we pick such values of x greater or equal 6 जिनके साथ इनका मॉड करूँ तो 5 दे? मे बी यस. इफ यस दैट्स द आंसर. अब ये रेंज की बाउंड्री में कैसे ढूंढ लूँ? हाउ कैन आई डू दैट? So if you look closely, what to do? Wait a minute, I think. Wait a minute. Yeah. Sorry for the disturbance. So let us just try to think more about this. So as I said, the minimum answer is always the minimum number. Okay. So let us just write all of the observation we are making. Main is the answer always. Now we want maximum. The maximum answer कहाँ तक कौन सा वैल्यू maximum जा सकता है? Like maximum the answer can go up till maximum element of this value, which is 10 to the power 9. So 10 to the power 9 अगर ये है तो फिर क्या 10 to the power 9 भी आंसर हो सकता है? Can you do a binary search? We'll say from the minimum to the maximum. Do for each and check क्या वो सेम आ रहा है या नहीं. आ रहा है तो गुड टू गो, नहीं आ रहा है तो खत्म. बट वो क्या ऑप्टिमल होगा? If I just sort a dot begin, dot end, if I just sort and now let's say int l equal a of 0, r equal a of n minus 1, right? And the answer is always possible, right? This would in the answer answer equal l. Okay, the answer is always possible. While l is okay, no. Hmm. But how binary search is sequentially बढ़ थोड़ी रहा है? Monotonic है क्या ये? नहीं है ना? Then okay, no, it's monotonic. No, it's not. क्या मैं बोल सकता हूँ अगर 8 के लिए काम नहीं कर रहा तो 7 के लिए भी नहीं करेगा? नहीं, मैं बोल नहीं सकता. कैसे बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ अगर no, I can't say that. The answer is from minimum to maximum. Okay, that's for sure. And minimum is always the answer. That's also for sure. Now, if I just do like okay, it will not gonna work, but still I'm doing for like um I equal L to I less equal R. I know it's O of n square, but not even O of n square. It's O of 10 to the power 9 into n. So it's very big.
uh, what I'm trying to do is ki, like I just want to check. Obviously, it will gonna work. It should work. Like, and if you do mod with everything each time, then again check. No, no, no. फालतू कर रहा हूँ मैं. ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है. I should have stayed. Okay, now I have to find something जो इसका देखो आंसर मिनिमम तो मुझे मिल गया the which is the minimum number itself. Okay, x का minimum value. अब maximum मुझे निकालना है. What can I do? If you're not taking that minimum value, okay, that means you're taking something which is greater than that minimum. And that means you want each and every element of that array to be equal as that minimum value for sure. That's for sure. If here the five is not our answer, that means each and every element of that array becomes 5. मतलब 11 mod something will gonna give me 5, and that something is greater than 5 obviously. 74 mod something will gonna give me 5. So can I get that something wala thing? Can I do this? That let's say we have one variable A, one variable B. A mod B equals X. Can I do this thing? What I'm trying to say, can I do this thing? We have A mod B equals to X, let's say. And we have this X, A, we have this X. We have this A, we have this X. Now all I want is there exist any B जो ये बना दे. ये बस हमको फाइंड करना है. If exist, yes, you are good to go. If not, then it's impossible, right? So how the hell I can find this with the whole question like reduced to this. If there is A mod B equals X, and we know X. How we know X? X is the minimum value. If the minimum is not working. If there exists this whole shit, then if there exists any B which is satisfying this whole equation, then the answer is always B. Okay, we got the logic under very few minutes. Like now the thing is how how can we get that B? A mod B equals X means what? And now we want what? We want B. So A mod B equals X means let us take an example. Okay, let me just open this where I have written. I think yeah. Okay, not only that, we have to find that value too. Now, how the hell I can find that value? For example, yes, there exists in V. Okay, so then we will came to know that yes, the answer is not minimum. The answer is something greater than minimum, and that's the what is that something greater than minimum shit? That something greater than minimum is that B value. इसमें क्या था? A mod X, which is that B value, which is minimum and giving X. So we want minimum B, minimum
B minimum B. One minimum B which satisfied A mod B equals minimum of array. This is all we want, right? Yes. So yeah, this is all we want. We want such B, minimum value of B such that A mod B equals to minimum of array. अगेन सेम ही तो हो गया क्वेश्चन, बस एक को हटा करो वो आ गया, अब ये कैसे फाइंड करूं? Minimum value of B such that A mod B is giving me the some value. That means how can I solve this? Okay, right. Uh, 11 mod something will gonna should give me 5, and that something minimum value of B should 4 mod 5. No, ये तो कुछ काम नहीं बना. 74 मतलब हमको एट द एंड ऑफ द डे क्या करना होगा? हमको एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू डू जस्ट 11 mod x1 should be equal 5, 74 mod x2 should be equals 5, 5 mod x3 should be equal 5. That means that x3 is greater than 5 obviously, but so 22 mod x4 should be equal 5, 23 mod x 22 52 mod x5 should be equal 5, 97 mod x6 should be equal 5, and 82 mod x7 should be equal 5. Now among this x1 x2 x3 x4 x5 इन सब में से मिनिमम निकाल के मुझे दे दो, वही हो गया मेरा आंसर. अब ये कैसे करूंगा मैं? Can I do a have step like this mod this mod this equals 5. Now we want 11 mod x 11 mod x1 is equals 5. Now what is the minimum value of x1 जो मुझे 5 दे? So वही तो बना ना a mod. हाँ वही तो बना a mod b equal x. What is the minimum value of b जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो? फॉर एग्जांपल 5 mod 2 नहीं लो, 5 mod 5 नहीं लो. Let us go with 13 mod 2 will gonna give me 1. Okay, 2 नहीं लूँ मैं 3 लेता हूँ. 13 mod 3 is 1. Now 13 mod 2 is also 1, and what 13 mod 5 अगर करूँ 13 mod 5 is 3. So the answer is 2. The question is all about I have to find the minimum b for which a mod b equals x.
I have to find minimum b among all. देखो 13 mod 3 इक्वल 1 मतलब क्या? मतलब अगर 13 में मैं -1 कर दूं फिर 3 से मॉड करूं तो वैल्यू 0 आ जाएगा। हम्म हम्म। उस वैल्यू को मैं कैसे निकालूं? I have to find minimum b for which a mod b is equal to x. Is there any idea, particular idea? ये ऑफ में हो जाएगा आराम से, लाइक एल आर शॉर्ट वॉट शॉर्ट कर लेता हूँ, कोई शॉर्ट का कोई जरूरत तो है नहीं वैसे। all we want to do like int answer equal now now what we have to do is we have to run a loop from 0 to n, and we have to check. For example, I'm just writing, and we will pass a of I, and we will pass our minimum element, which is answer. Okay, not answer. Let me just इसको mn में रखता हूँ. Int answer equal mn always. एंड मैं यहाँ पर कुछ कुछ लिखूंगा जिससे मेरा वो मिनिमम एलिमेंट निकल जाएगा ए ऑफ आई के लिए। एंड फिर मैं क्या करूँगा, if our answer is greater than, if our answer is like, yeah, if our, no, not only that, we have to find the minimum. Okay, not like that, we have to find आंसर को लास्ट में अपडेट होगा int c इक्वल, like if c is, if a of I को मैं फिलहाल के लिए int y equals a of I, let us say that, and if a of I is, if the value of y will gonna take, no, not like this, sorry मैं कुछ भी कर रहा हूँ. The thing is, um if not to find the minimum, right? तो अगर मैं इस यहाँ से कुछ कुछ करके फॉर एग्जांपल मैं x का वैल्यू निकाल लूँ, ओके, int x जो कि मैं निकाल लूँ, then we just have to find the minimum x. So yeah, or we can just do like int x, like कुछ भी करके अगर मैं ये निकाल लूँ, then just we have to do what, c equals minimum of c comma x each and every time, and after that we'll just compare answer equals minimum of answer comma x, sorry, answer equal maximum of answer comma x,
and we'll just see out our answer. So this should be our code. Okay. इन टेक्स यहाँ पर वो दे रहा है. Oh, sorry, not x. It should be c. So yeah, now we have to find this x for each value. How? The code is very simple. Everything is very simple. We need just we have to know just one thing. Is there present any b? How to find the minimum b for which a mod b is equals x? For example, something mod something is equals 5 कैसे लूँ? For example, let's say मैं 3 के साथ ही देखना चाहता हूँ. तो 13 mod 5 is 3. तो इसका मतलब 13 को 5 से डिवाइड करने के बाद मॉड्यूलो लेने के बाद 3 आता है. ओके, एंड हमको 3 ही चाहिए. फॉर एग्जांपल लेट्स से 13 mod 5 is 3. इज देयर एनी अदर वैल्यू 13 mod समथिंग जो कि मुझे 3 देगा? हो सकता है इन फ्यूचर, लाइक इफ इट्स 5 का मल्टीपल कैन आई से देन. हाँ. ओके वेट, 5 का मल्टीपल ही देंगे 3. 3 देने का मतलब क्या है? मतलब 13 से 3 माइनस करो, जो वैल्यू आएगा वो 5 से डिवाइड होगा. सो अगर मैं 13 - 3 करूँ, 10 दे रहा है. अब मैं इस 10 को अब मैं इस 10 से 10 is a multiple of 5. Okay, so 5 will also give. But 10 is a multiple of 2 too. So 2 will not gonna give. 2 will not gonna give 3, I think. Yeah, 2 will gonna give 1. 0, 1, 1. 1 देगा. So 10 दे दिया. क्या 10 ही है मैक्सिमम? नहीं, 10 नहीं है. 5 है. जो कि 10 का एक डिवाइडर डिवाइड करता है 10 को. डिवाइडर और order. हम्म. तो इस 10 से 5 तक कैसे पहुंचू? Can you say the answer, or will it be gonna be like the B always gonna be? No, no, no. We can't say कि B always प्राइम नंबर होगा. Okay. Here we go. I just wanna check something. Okay.
मोड 5 नहीं बट मोड 6 देखते क्योंकि आंसर वहाँ पर मोड 6 था सो देयर शुड बी वन वैल्यू एटलीस्ट जो मोड 6 देने के करने के बाद 5 देगा वैल्यू या देयर आर टू ऑफ देम हाउ द हेल आई टू गेट दिस 6 they should give us like the minimum value among all x जो मुझे जिस 6 जो मुझे करना वो 5 दे रहा है मिल भी गया मुझे 5 राइट we also got 5 we also got our 5 over here but now other catches else can be anything others can be anything but there should be अगर 6 से मैं कर रहा हूँ मतलब वहाँ पर एक 5 देना ही चाहिए क्योंकि मैं 5 ही बना रहा हूँ अल्टीमेटली okay. I should solve this okay 5 to 5 so वही तो हुआ ना we want such b जो मुझे such b we want the minimum value of b जिससे मैं a का मॉड्यूलो करने के बाद वैल्यू x आए अब ये कैसे निकालूं उनमें से हर सब में से मिनिमम वैल्यू जो कि 6 होगा उस हिसाब से minimum value of b after modding with a it should give me x uh, see 13 mod 5 is okay wait 1 minute yeah see 13 mod 5 is 3 now how to get this 5 if we just but interview a mod b equal x what is b now we can find b in such a way कि a minus x अगर मैं करूँ a minus x
mod v should be equal 0, so that means a minus x should be divisible by b. But we want what? We want 5. 13 mod 5 is 3. That means 10, 5 by 10 is 2 is divisible. But 2 लियो तो फिर 5 आएगा. इन दोनों से कौन सा वाला होना चाहिए? तो अगर मैं 2 से क्या वो देगा? और क्या वो हमेशा होगा? 13 नॉट, और यहाँ से लिख ले लेता हूँ ना, यहाँ पर क्या था? 74 को अगर मैं 6 से मॉड करूँ तो 2 आता है. तो 11 को लिखते हैं. 11 mod 6 is 5. That means 11 minus 5 which will gonna give us 11. तो एक चला गया 4. 6 mod 6 will gonna get 6. Now since we have 6 from 2 to that end, from 2 to where? Can you just giving me 5? वही तो इन, वो अगर 10 to the 9 है तो फिर अगर मैं 10 to the 9 तक का वैल्यू देखूँ तो भाई, बट क्या मुझे 10 to the 9 तक चलना भी पड़ेगा? इससे पहले ही नहीं मिल जाएगा? हम्म, इससे पहले ही नहीं मिल जाएगा. You have to find some x. Okay. Okay. Now you have to find some x. Okay. क्या मुझे चलना भी पड़ेगा उतना टाइम तक? हम्म, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना. क्या मैं 10 तक ही चलूँ तो? इसका मतलब क्या है? X. We have mn. हाँ. int y equal, okay, x को ही करता हूँ. int x equal a of I minus a of I minus x. a of I minus, क्या y a को ऐसे क्यों दिखा? अच्छा कुछ नहीं लिखा ऐसे. So a of I minus r mn. Okay. Yes. After that
हम आई का वैल्यू देखो 2 से मैं अगर चलूँ टिल दैट एलिमेंट एम एन टिल दैट एलिमेंट एक्स एंड let me just make it y. Okay, yes, and x क्या करें एंड मैं बोलूँ क्या if x if a of I mod r I is giving us mn, that means that's the minimum value. एंड मैं यहाँ पर ज्यादा दूर तक नहीं चल रहा, मैं वो नंबर माइनस मिनिमम नंबर तक ही चल रहा हूँ एंड आई थिंक मुझे मिल जाना चाहिए. आई एम एस्टिमेटिंग दो इफ समथिंग लाइक दिस एक्स के अंदर वो एम एन डालो, वो नहीं वो आई डालो एंड ब्रेक हो जाओ. उसके बाद ये करो. What? The what the heck? स्टैंडर्ड लिस्टेड एरर ये सब क्यों? और ये सब ये भी क्या? अच्छा हाँ, नहीं वो तो ए ऑफ आई. अच्छा, अगर ये वो मिनिमम एलिमेंट ही हुआ तो मिनिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट इज जीरो एंड इफ इट्स जीरो देन वाई के अंदर जीरो चला गया, सो 2 से 0 तक तो हाँ वो वाला एक सीन हो जाएगा. कैन आई जस्ट स्किप दैट? या वी हैव टू स्किप दैट बिकॉज 2 से चला रहा हो. 2 से नहीं चलेगा, मैं 0 से ही चलाता हूँ. obviously it is not gonna give us that desired thing. 0 से तो नहीं चला सकता मैं, इम्पॉसिबल. 0 से कैसे? ये क्या है? अगर y 0 बन गया, if a of I equal to mn, just continue. else do this stuff like वो तो मिनिमम है तो मिनिमम माइनस वो करो, y ले लो, y का रेंज मुझे मिल गया. अब x में एट दी एंड वो ही जा रहा है, सो माइनस 1. ये क्या है? हम्म, ये रन करके देखता हूँ, मुझे मतलब एरर क्या आ रहा है. ये गार्बेज वैल्यू थ्रो कर रहा है कुछ भी. और वो क्यों? मिनिमम एलिमेंट ले लो, आंसर के अंदर मिनिमम रख लो, मैक्सिमम ऑफ दिस करो, ये करो वो करो. 1 से y तक का चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या? 13 mod 5 is 3 we saw.
That means 10. 13 more 10 will also gonna give me 3 for sure. Now we are saying कम भी हो सकता है. So 1 से चलो, चलते रहो. 2 मोड 13 नहीं देगा, 3 मोड 13 नहीं देगा, 5 मोड 13 हाँ देगा, 3 देगा, जब देगा ब्रेक. ओके, आई थिंक दिस लॉजिक शुड वर्क. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सीन हो सकता है, बट व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. और ये क्या एरर है? मैंने पहली बार देखा है एरर. ओके, कैन यू आस्क एनी एआई ये एरर क्या है? मुझे बस वो जानना है, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है क्या. इसको थोड़ा साफ सुथरा करके लिख लेते हैं. इस टाइम डिटेल करना चेंज आर एक्स. अगर एक्स में कुछ गया ही नहीं होगा तो नहीं, एक्स में जाएगा, हमेशा जाएगा. एक्स में वैल्यू, एक्स में हमेशा वैल्यू जाएगा. क्यों? फॉर एग्जाम्पल we have AIS 16 and MNS 5. So 16 minus 5 is 11. So we'll say 1 to 11 तक चेक करो, कोई वैल्यू. 16 mod 11 you're gonna give me 5, we know for sure. ओके हाँ, ये ठीक है. मुझे पता नहीं एरर क्या आ रहा है. जस्ट आस्क जीपीटी कि ये एरर क्या है. कोड तो कॉपी नहीं करूँ, बट हाँ, वी हैव टू सी दिस. ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ. इसको कैसे क्लोज करते हैं? क्लोज साइड बार टू हट. इंडेक्स इज ग्रेटर देन आउट ऑफ बाउंड्स. ओके, आउट ऑफ बाउंड्स बोल रहा है. असेंडिंग बिफोर पुशिंग, ऐसा कुछ किया है क्या हमने? ओके, आई आई थिंक आई अंडरस्टूड क्या गलती की. अब पे क्या, मैंने तो कुछ भी कर दिया. दोनों आई ले लिया, यहाँ पर उसको सेट नहीं किया. ओके, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको जस्ट चेक कर देना पड़ेगा. देन yeah, it works. I don't know its time complexity. Okay, I don't know about its time complexity. Okay, what the heck? Number theory. It will gonna run till what? It will gonna run till, since, till y. And y is what? Y is, let's say y is maximum. So maximum number minus minimum number, which is 29. 10 to the power 9 can be possible. And here it's running for like often. So it shouldn't work. It should give me daily. Right? Yeah. It should give me daily. ये वाला पोर्शन को मुझे और जल्दी, मतलब ये वाला लूप मुझे एक शॉट में करना होगा. अब वो कैसे करूं मैं? बट इट शुडंट गिव मी टेली, बिकॉज ऐसा सिचुएशन कभी आ ही गई नहीं उससे पहले, तो वो हो जाए. ये क्या हो गया है? ऐसा सिचुएशन कभी आएगा क्या जब वो मिल ही नहीं रहा? ओके, वो यहाँ पर आया नहीं. नाउ आई हैव टू
फाइंड दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम क्या था? वाओ, वाओ, ऐसे भी काम चलता है क्या? ऐसा सिचुएशन कभी आएगा क्या जब ये नहीं हो रहा है? Shouldn't it always pass? Because मॉड्यूलर क्या कर रहा हो? रॉन्ग आंसर दे दिया? ओके, हाउ रॉन्ग आंसर? हाउ द हेक? रॉन्ग आंसर कैसा? हाँ भाई। फोर्थ नंबर डिफर। एक्सपेक्टेड फोर फाउंड टू। फाउंड टू because they expected four for this. How can you expect four? Minimum one is always possible. After that we're gonna say two possible है क्या? Two possible है क्या? I think two possible है because two possible है क्या? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? फॉर ए ऑफ आई एम वो कंटिन्यू मार दिया और 5 के लिए सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ. सो 5 minus 1 is 4. So you are checking for 4. So we are checking for 4 and four will gonna be our answer obviously, but 2 भी तो 1 दे रहा है और यहाँ पर इससे ज्यादा है ही नहीं. तो क्या? Okay, logic. Okay, this one was fucking awesome. Fucking awesome. And I am very happy that नंबर थ्री सीखा कुछ तो फायदा हुआ यार. एलविस भाई ए सॉरी सॉरी सॉरी. नेक्स्ट वन. बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. आई सॉ दैट कि वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, दैट्स व्हाई यही. अबे लोड़ू, तो तुझे भी तो मैक्सिमम ही चाहिए. यही मैक्सिमम है तो मिनिमम में जा क्यों रहा है? यही मैक्सिमम है तो वही लेना. मिनिमम तो तू यहाँ पर कर रहा है. शिट. या गॉट इट. ओके 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 ओके. दिस वन वाज अ गुड प्रॉब्लम. ओके, I'll mark it for practice. ओके. तेजा भाई को देख के मुझे भी ओके ओके बोलने का आदत लग गया. इट्स गुड. इट साउंड्स गुड एंड या. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके. अगेन सेइंग ओके. ओके. Oh, stop saying okay. Okay.
छोड़ो भाई, खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। ओके, दिस वन आई थिंक 1200। ओके, ओके, हाँ सब ओके 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 ही बोलता रहूंगा आज मैं। ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल गोना टेक, और इवन आई कैन सॉल्व इट और नॉट, बट विल गोना गिव आवर बेस्ट टू सॉल्व इट। ओके भाई, मैं कितने टाइम से कर रहा हूँ? 1 घंटा हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो कि मुझे नहीं लगाना चाहिए था। मुझे कम टाइम में सॉल्व करना चाहिए था। आई थिंक अंडर 20 मिनट्स आई गॉट द लॉजिक, एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मतलब थोड़ा दिमाग एकदम फोकस नहीं था। तो मैं अगर कॉन्टेस्ट के दौरान नहीं दूँ तो फिर मैं कितने टाइम पे सॉल्व करूंगा? आई थिंक 45 मिनट्स। बट मुझे मुझे एक क्लिक किया 20 मिनट्स पे, और जब क्लिक किया तभी मुझे सॉल्व करना चाहिए। आई शुड सॉल्व इट अंडर 20 मिनट्स। वो जो एक्स्ट्रा टाइम है, विच इज आई थिंक अराउंड 15 and 5, अराउंड 25 मिनट्स, उसको कैसे रिड्यूस करो? आई थिंक इसको, इसका जो मैंने लॉजिक लिखा है, सो दिस इज द लॉजिक, वो माइनस वाला शिट। एंड should I should I explain the problem? Okay, if I solve this one, I'm going to explain. Okay, so for that, let us do one thing. Okay, yeah. Why I did this? Because of this. Now I can delete. Okay, तो ये यहाँ पर रहा। अच्छा, दो दो क्यों ओपन हो गया? जो भी है, you start with an integer array which initially consists in zeros. You have to perform the following action exactly n times. That's good. That's good. Choose two integer l and r and assign ai equals ai plus 1. Okay, एक से बढ़ा दूंगा। Choose two integer l and r and assign ai to ai for l2r में हर एक को मैं एक से इंक्रीज करूंगा। You are given an array containing b initially consist of n zeros. ओके वेट अ मिनट, मुझे फैन को ऑफ करना होगा। ओके, मुझे ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा। वेट 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 वेट, ये ना स्टॉप ना कर दो। ओके, वी आर बैक। एंड अभी थोड़ा नॉइजी हो सकता है बिकॉज टर्न ऑफ द फैन, एंड बाहर थोड़ा नॉइज है बिकॉज आई एम नाउ इन माई होम। ओके, you are given an array b consisting of n integers. Your task is to choose a value l to r for each action. Okay, we have n zeros, which initially consist of n zeros. You have to perform a function n times. Okay, consisting of n integers. Your task is to choose. देखो ये भी b में आया है, जो कि 1200 रेटेड है या कुछ भी है, आया तो b में है ना, so I should solve this. After all actions are performed, it is impossible to reorder the elements in such a way that a becomes equal to b. The maximum value of r minus l plus 1 over all action is as large as what is the possible value of l minus 1 length. The length of that segment, they ask. Then going to be of integers. So after all in actions are performed, it's possible to reorder the element in such a way that a become equal to b. Wait a minute, I think आज मैंने ज्यादा प्रॉब्लम, आज मैंने कोड शेप में थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। सो ओके, आज मैंने किया है, कहाँ किया, कितने, दो क्वेश्चन में ये क्यों ऐसा दिखा रहा है डार्क ग्रीन? दो में से एक तो मैंने पहले किया था, वो प्रैक्टिस के लिए। वॉट एवर, शुड सी। You are given an array B consisting of n integers. Fair enough. Your task is to choose such values L and R for each action that
After all n actions are performed, it's impossible to reorder the elements in such a way that A becomes equal to B. The maximum value of A becomes equals to B मतलब क्या? अच्छा, we're gonna solve it, okay? But I think वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है एंड एक्चुअली मेरी मम्मी खाने के लिए बुला रहा है, सो बुला रही है. My Hindi is not good that much. So yeah, I'll gonna solve it. I think if I solve it, मैं वीडियो बनाऊंगा. अगर आज रात ही मैं सॉल्व करूँ तो आज रात आज दो वीडियो हो जाएगा, ओके? सो या, सॉरी फॉर दैट.